Good morning, student. My name is Supriya and I am from Premchand Memorial Public School. Student, today we are doing chapter 8, that is commercial mathematics, and in that we are doing exercise 8.4 and exercise 8.5. As you know, we have already done exercise 8.1, 2 and 3. Now we are doing exercise 8.4, and in that we will learn about profit and loss. क्लियर नाउ फर्स्ट लेट्स नो अबाउट प्रॉफिट. व्हाट इज प्रॉफिट? जैसे कि आपने ये नाम पहले भी सुना होगा कि मुझे इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है. व्हाट इज मीन बाय प्रॉफिट? इफ द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस देन द शॉपकीपर गेन सम मनी. दिस इज कॉल्ड गेन और प्रॉफिट इन द ट्रांजेक्शन. सो सेलिंग प्राइस क्या होता है बच्चे? जिस पे चीज खरीदी जाती है. एंड कॉस्ट प्राइस जिस पे दुकानदार उसको खरीद के लाता है. और अगर हमारा सेलिंग प्राइस, अगर दुकानदार का सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, तो ही गेन्स प्रॉफिट. और अगर कम होगा तो देन ही गेन्स लॉस. और हाउ विल वी फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज? वी विल फाइंड बाय प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. इज इट क्लियर? वेरी गुड. नाउ कम टू लॉस. व्हाट इज लॉस? If the selling price is less than the cost price, then the shopkeeper bears a loss. This is called a loss in the transaction. So, अगर हमारा cost price selling price से ज़्यादा है, मतलब selling price जिस पे चीज़ बिकी है वो कम है और ख़रीदने वाला रेट हमारा ज़्यादा है, then he may face loss. That means CP minus SP. Loss percentage we will find loss upon CP into 100. Got it, student? Very good. Now let's take two example of this. See student, now in this question we have to find profit or loss. Okay, so अगर हम इसको देखते हैं सम को तो हमें पता चल जाता है. सेलिंग प्राइस इज 908 and cost price is 825. That means selling price is greater than cost price. That means shopkeeper gets profit. Means SP minus CP. That means 908 minus 825. He got profit of amount 83. Got it, student? Now let's see question number 2. In this, CP is this and SP is this. That means CP is greater than SP. मतलब cost price ज़्यादा है selling price से. That means he has to suffer loss. He has to suffer the loss of 20 rupees. Got it, student? I hope आपको clear हो गया होगा. Now let's see some more questions from book. See student, I request you please open page number 75 of your test book. Got it? See example number 26 here. A shopkeeper bought 24 chairs at the rate of 450 per chair. एक शॉपकीपर 24 कुर्सियाँ लाया किसके रेट पर? एट द रेट ऑफ 450 पर चेयर, जिसमें उसने 16 चेयर जो है एट द रेट ऑफ 600 बेची. एंड द रिमेनिंग चेयर ही सोल्ड फॉर ₹400. 400 रुपये में बेची बची हुई चेयरें. नाउ फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज. वी हैव टू फाइंड हिज लॉस और गेन परसेंटेज. ओके, CP ऑफ 24 चेयर्स, मतलब 24 चेयर्स का CP कितना होगा? 450 इंटू 24, दैट इज 10,800. नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर इज इक्वल टू 1600 इंटू 16, दैट मीन्स 9,600. Now SP of remaining 8 chairs is equal to
400 into 8, he got 3200. Now the total SP of 24 chairs will be 9600 plus 3200. यानी कि हमने दोनों जो 24 चेयर्स जब 16 प्लस 8 मिला के 24 बनेगा तो दोनों चेयर्स का हमने सेलिंग प्राइस टोटल कर लिया. वी गेट 12,800. दैट मीन्स SP यानी सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. वी कीप द फॉर्मूला for that and we got the answer 2000 rupees. Okay, now we have to find out profit percentage. We again keep the formula and we got 1814 by 27. This is the gain percentage. I hope आप सबको समझ में आ गया होगा. Now what you have to do in this exercise? Okay, now let's come to the next exercise, student, and have a look for that. See, in exercise 8.5 we have to find simple interest. Simple interest is equal to principal into time into rate upon 100, and in shortcut we will write it as SI is equal to P into T into R. And to find out the total amount we will do principal plus interest. We get the total amount of interest. Got it, student? अब आप सोच रहे होंगे what is simple interest? Now, see, the money which is borrowed or invested is called the principal. जो money ली जाती है या invest की जाती है, that is known as principal, and which is denoted by P. The time is the period for which the money is borrowed. अब जिस time के लिए वो money borrow की जाती है, that is time. It denoted as T. Now, after the specified period of time, the additional money to be paid for having used the borrowed money is called the simple interest or interest and is denoted by I. अब कुछ टाइम के लिए जो मनी ली जाती है उस पे हम कुछ और पैसा लगा के जब उसे पे करते हैं, that is known as our simple interest. And the interest rate in an agreed percentage of the sum borrowed at the time of taking the money throughout the loan period and is denoted by R. और जितने % पे वो ली जाती है, that is known as our rate and it is denoted by R. The money repaid or given back and which includes the interest and principal is called the amount. जो कि बाद में दी जाती है प्रिंसिपल के साथ वो इंटरेस्ट अमाउंट जोड़ के, that is known as amount. Got it, student? How you have to do? Now, let's do one example. See, our question is, a sum of rupees 1200 is lent for 2 years at the rate of 5% per annum. मतलब year. Find the simple interest and amount. Now, हमारा principal क्या हुआ? 1200. Rate is 5%. Time is 2 years. And our formula for this simple interest is P into T into R. That means principal into time into rate upon 100. Now we will keep the values. Principal is 1200. Now time is 2 years and rate is 5 upon 100. We will strike off the zeros. Now this is 12 twos are 24 into 5. That means our answer is 120. Okay, now we have to find the amount also. What is the formula for amount? P plus interest. What is our principal? 1200 plus what is our interest? We got 120. Now our answer is, got it, student? How we got our amount? Very good. Now let's take few example from book also. Now I request you all, please open page number 77 and in that see question number 32 here.
A farmer borrowed rupees 20,000 from a money lender at the 12% per annum simple interest. अब उसने एक फार्मर ने 20,000 रुपये लिए, किससे लिए? जमींदार से। कितने परसेंट पे? 12% पे। एट द एंड ऑफ 3 years he settled his loan by paying 15,000 and a buffalo. बट 3 years के बाद उसने अपना लोन चुकाया 15,000 रुपये प्लस एक भैंस को देके। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बफेलो। हमें बफेलो की वैल्यू निकालनी है। नाउ वी नो व्हाट इज द प्रिंसिपल रेट एंड टाइम. We keep the formula and we solve the equation. We got 7,200. Now we keep the formula of amount. We keep that 20,000 plus this is our principal and this is our interest. We got the total amount 27,200. Now he paid the cash of 15,000. Now we will subtract 27,200 minus 15,000. We got 12,200. गॉट इट स्टूडेंट कि हमने कैसे निकाली बफेलो की कॉस्ट. नाउ एग्जाम्पल नंबर 33. हेयर सुहेल बोरोड रुपीज 12,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड. हिज फ्रेंड गेव 12,000 at 18% and the remaining amount at 15% per annum. How much total interest he has to pay after 3 years? सुहेल ने बोरो किए 12,000 रुपये, उसके फ्रेंड ने 2,000 रुपये 18% पे और बाकी पैसे 15% पे दिए. नाउ वी हैव टू फाइंड द इंटरेस्ट. अब हम क्या करेंगे? अलग अलग इंटरेस्ट निकालेंगे. ठीक है, पहले हम निकालेंगे 2,000 का इंटरेस्ट. विद दैट वाज 1,800 बाय कीपिंग द फॉर्मूला P इंटू 2 इंटू आ. एंड इंटरेस्ट 2 निकालेंगे 10,000 पे विथ 15% ऑफ रेट. दैट वी गॉट 4,500. नाउ वी विल टोटल द इंटरेस्ट. Interest number 1 and interest number 2. Now we got the total amount 5,580. I hope student आप सबको ये चैप्टर के एक्सरसाइजेस सारी समझ में आ गई होगी. स्टिल यू आर हैविंग एनी डिफिकल्टी यू कैन टेक्स्ट मी. टेक्स्ट करिए, आई एम देयर फॉर यू. मैं आपके सॉल्यूशंस को सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ. Whatever the query you have, please text me. Please. You can text me and do your assignment very well. All the best student for your given assignment.